This is your host Salim bin Muhammad Rafi, and here is my YouTube channel. My subject today is again the massacre and the genocide which has been continuing, and especially the Rafah and the recent, I think, the tragedy and the barbaric act of bombardment and killing hundreds of people who were there to just get a sack of flour to feed their families, and they were straight bullets right into their chest cages. Even the babies, even the children, they were found to have bullets. So the despicable, most disgusting, the cruelest nation on earth is these Jews, these Zionists, these criminals, these baby killers, these sons of Netanyahu. These are animals. There are no words. Even you can't compare them with pigs. They are even worse than those animals because they have no compassion. They are not own children. What if they get? What a hell they have made about 7th of October and few thousand Jews if they died. So what? What have you been doing for the 75 years? Count them. How many hundreds and thousands you have intimidated, taken their homes, killed their women, made them naked. You had a complete naked search of those women, and see how you touched them, how you raped them, how you killed them, how you removed their kidneys, how you removed their organs, how you dig their graves, how you sold their bones and skeletons to medical school, how you experimented on them. Damn you. And now what are you doing? You want people to have sympathy for 11 or 1200 people. You still want any word of sympathy on someone. Is that the pretext? You are continuing for 5 months. What have you done? Only instead of killing few women and children, which you have killed in thousands, not in 30,000, you killed in thousands. You have flattened the total your both north and south Gaza, total strip, so that you can build your real estate. Damn hell will you want. Person like me who is there to save lives, and all my life I have had a compassion to do it. I have absolutely no sympathy for a nation who kills their own hostages, their own people. Look at the cries of these people who are shouting, don't shoot, don't shoot. Now they're killing their own hostages so that the matter of hostages is over and they can take over and clean up the whole of Gaza. Then there will be the turn of the West Bank, and then eventually they will, just like Babri Mosque, they will go after the Al-Aqsa Mosque, then spit on you and keep your aircrafts in your garage and only make statements and condemn and condemn and condemn. With these words, I want to show you the cries of the hostages where the Israeli soldiers killed them. Then they killed the Rafah kids. See how with a sack of egg, they put direct bullets into their chests of more than 100 people there. And they continue. How dare you keep making these threats that we are going to do this in month of Ramadan? There will be nobody's fast will be accepted, nobody's prayer will be accepted unless you go and destroy these Zionists. Every Zionist living on this planet must be eliminated, whether it is in America, whether it is in Europe, whether it is in Israel. I think you have to get rid of this menace and dirt, and if you want peace in this world. Look what they have done in Red Sea. Look what they have done to the world peace, the world trade, world economy. Are you going to let them do it? It is a matter of shame for the Chinese president and Putin and all the world powers, even that butcher of Gujarat. Now it is your turn. See how you pass the Arabian Sea and the Red Sea. They will destroy you. See how many millions of the Yemeni, a small, tiny, famine-stricken country. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको 27 फरवरी के असर हाजिर के उस असीम मार्के की मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के जांबाज पायलट्स ने भारतीय जहाजों को निशाने इबरत बनाया। वीडियो मान लो इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को बॉम्ब कर भी लेता है, तब भी इजराइल को 1 घंटा लगेगा अपने एयरबेस पर वापस लौटने के लिए, लेकिन ईरानी मिसाइल्स सिर्फ 7 मिनट में ही उनके पूरे स्ट्रिप को ही तबाह कर देंगे।
ये है ईरान की चेतावनी इजराइल को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ईरान अपना खुद का एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस बना रहा है। बेस भी नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी होगा। सो नवंबर 2021 को अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के कैपिटल तेहरान से 300 किलोमीटर दूर नतान्स के बंजर रेगिस्तानी इलाकों में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑब्जर्व की। एंड यू नो, वहां के सैटेलाइट इमेजेस पर उन्होंने जब थोड़ा सा गौर किया तब उन्हें कुछ ट्रक्स, वाटर टावर्स और कंस्ट्रक्शन की मशीन्स दिखाई दी। अब इन फोटोज को देखकर अमेरिका सचेत हो गया, क्योंकि नातान्स का यह इलाका वही साइट था जहां पर नवंबर 2021 में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हुए पकड़ा गया था, और इसी वजह से यूएसए ने उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए थे। सो अमेरिका क्लियरली ये समझ गया कि समथिंग इज रॉन्ग, ईरान इज डेफिनेटली अप टू समथिंग। सो इस इमेज को देखकर क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? वेल, अभी ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर सिटी अंडरग्राउंड बना रहा है। ईरान की यह सिटी 100 मीटर्स लॉन्ग और 500 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड है, जिसमें हजारों मिसाइल्स और फाइटर जेट्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, रेडी टू लॉन्च। इनफैक्ट इसमें से एक मिसाइल, ईरान का इमाद मिसाइल, इसके रेंज में तो इतने सारे कंट्रीज स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है, इंक्लूडिंग इंडिया। और बस इसीलिए जून 2022 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने एक वार्निंग जारी की, ईरान बहुत ही जल्द एक न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, विच इज अ ह्यूज न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यूएसए कहीं ना कहीं इस अटैक के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही था, क्योंकि सही मायने में तो अमेरिका ईरान पर 2006 से ही नजर रख रहा था। सो बात यह है ना, 2006 में ही CIA को इन न्यूक्लियर साइट्स की खबर मिल गई थी, लेकिन वो अंडरग्राउंड डेवलप हो चुकी है, इस बात का पता CIA तक को भी नहीं था। लेकिन फिर 2021 में जब ये सैटेलाइट इमेजेस रिवील हुए, तब ये बात दुनिया के सामने आई, और फिर तो 2022 में IAEA के वार्निंग के बाद ईरान के इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी के बारे में काफी बातें सामने आई। अब इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग बात है ना, वो ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे साइट को जमीन के अंदर इतना गहरा डेवलप किया है कि वो साइट न्यूक्लियर और साइबर अटैक प्रूफ है। अब इनके मिसाइल्स, जिसमें से इमाद और सिमोर्ग काफी प्रोमिनेंट है। अब इमाद की रेंज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसकी खासियत की अगर बात करें तो ये ईरान का पहला नेविगेशन गाइडेड मिसाइल है, जिसे लॉन्च करने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए इमाद मिसाइल से अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो वो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इन देशों ने यूएस मिलिट्री के 18 बेसिस को अपने देशों में जगह दी है, और इसीलिए ये कंट्रीज सबसे ज्यादा थ्रेटन फील करते हैं, क्योंकि ईरान कभी भी उन पर इमाद से हमला कर सकता है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ईरान का इमाद मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि आमतौर पर होता ऐसा है कि अगर कोई भी मिसाइल 500 किलोज के ऊपर का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी रखता है तो उसे न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कंसिडर किया जाता है। और इमाद मिसाइल की अगर बात करें तो वो 750 किलो कैरी कर सकता है, और इसी पेलोड के साथ वो 1700 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को एकदम प्रिसाइसली अटैक कर सकता है। मगर सिर्फ इमाद मिसाइल ही नहीं, उस वीडियो में सिमोर्ग मिसाइल भी मौजूद था, जो ईरान के दुश्मन देशों के लिए है एक असली खतरा। सो अगर सिमोर्ग की बात करें ना, तो ये ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 4000 से 6000 किलोमीटर है। मतलब इस मिसाइल के ऐड होने से ईरान अब दुनिया का 9th कंट्री है जिसके पास ICBM है। यानी ईरान के रेंज में अब ना सिर्फ यूएस और एशिया है, बल्कि साथ ही साथ यूरोप के सभी मेजर सिटीज भी है। एंड अगेन, अगर मिसाइल ICBM है तो उसका न्यूक्लियर केपेबल होना तो बाय डिफॉल्ट तय ही है। और बस इसीलिए कई सारे नेशंस, स्पेशली यूएसए और इजराइल, इस न्यूज के बाद अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक तो ईरान और इजराइल नेचुरल एनिमी कंट्रीज है, और ऊपर से ईरान से एनिमिटी की वजह से यूएसए और ईरान के बीच भी डिप्लोमेटिक टाइज कुछ खास नहीं है। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये ईरान और यूएसए के बीच का कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑल द वे बैक टू इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में शुरू हुआ था 1979 में, जब ईरान में वहां के राजा शाह महमूद को हटाने US allies reached for Chinese products, probably because of the US reluctance to sell their Predator and Reaper drones to anyone who asked for them. Before the Turkish aerospace sector started exporting drones in earnest, which started around 2017, the situation had Israel and the US as the pretty clear heavyweights in the market. Mind you, the source for the list shown, the SIPRI Institute, gives really just a rough estimate, despite the seemingly detailed figures. But since Turkey's UAVs started selling well, the situation changed completely. In the last 5 or so years, Turkey went from nowhere straight to the top of the pack. Again, those numbers are to be taken with a load of salt, as they're a result of SIPRI trying to compile a dataset based on publicly available news reports. They are likely overestimating some figures while underestimating others.
Tracking US sales is likely more transparent than tracking China's, for example. Also, large UAV sales are likely easier to be tracked than those of small UAVs. As far as Binkov can tell, mini drones are not included in the list at all. Also, not all UAVs are the same, of course. Some are very potent, large and expensive, while others are simply small buzzers that don't provide nearly as much worth to their user. If the above list is adjusted so small and less potent drones are subtracted, then one would get this. Certainly a small little thing like the Scan Eagle or Aerostar is nowhere near as capable as a Turkish TB2, let alone a US Reaper or Chinese CH-4. Here's a list of just some of the more popular drones and their maximum takeoff weights. Generally, a decade newer and superior technology can compensate for less mass and payload to a small degree, maybe even offer the same performance as a drone double the weight. But drones several times bigger are still going to be superior. They will offer a longer loiter time over target area, a higher flight ceiling, putting them out of reach of some threats, and a higher payload, which directly translates to much longer ranged sensors and even bigger weapons capability. One can see that the Turkish Bayraktar TB2 drone is situated in the middle of the pack. It offers a decent payload and decent capabilities for a fairly low price of just a few $1,000,000, seriously undercutting the US offerings. The US stopped producing its Predator drone in 2018 and basically left that market segment to other countries. Its larger Reaper drone is way too expensive for many countries, while its Shadow series of drones are too small to be competitive with the Turkish TB2. Israel does have a range of drones roughly near that ballpark, starting with the Searcher, the Hermes, and ending with the Huron drone. But the Searcher is an obsolete design. The Hermes 450 is still a bit too small, while the larger Hermes 900 and Heron are just expensive enough that the TB2 manages to beat them on cost efficiency. Certainly the TB2, according to those CIPRI lists, is basically the only Turkish drone that sells abroad. But boy does it sell. It's not just about the low price tag, which is the result of the lower worker cost in Turkey compared to other countries. While China might compete on price due to its larger production volumes, it can't compete on politics. Chinese customers are still by and large the countries which have bought Chinese stuff before. Turkey, however, being a NATO member, gets to sell to pretty much whoever it wants. It gets the best of both worlds, selling to both Western and Eastern countries. While Israel is trying to cater to the same set of countries, their workforce can't match those Turkish price tags. So can any country do what Turkey did? Well, Turkey's आज को गिराया 14 फरवरी 2019 कश्मीरी मुजाहिदीन ने पुलवामा में भारतीय फौज को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में शदीद इजाफा हो गया। इलेक्शन की सियासत की भीड़ चढ़ी भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में मुजाहिदीन के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाने का इरादा कर लिया। 26 फरवरी की रात 1:30 पर भारतीय फिजाइया की 4 फॉर्मेशंस ने पाकिस्तान के सरक्रीक, रहीम यार खान, फासिल का और बालाकोट सेक्टर में घुसने की कोशिश की। भारतीय जारहियत की पहले से खबर होने की वजह से पाकिस्तानी शाहीन हिफाजती इंतजामात में पहले ही तैयार थे। इन तैयारों को भारतीय दरअंदाजी रोकने के लिए इन इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया। कोट की इस फॉर्मेशन की जानिब भेजा गया। इसराइली बॉम्ब की तवील फासले तक मार करने की सलाहियत की वजह से भारतीय तैयारे पाकिस्तानी तैयारों से दूर रहकर अपना पेलोड गिराकर भाग निकले। कुछ तैयारे इसी असना में पाकिस्तान में भी घुसे, लेकिन जमाने अमन में लागू फिजाई निगरानी की वजह से पाकिस्तानी तैयारों ने उन्हें निशाना न बनाया। फॉर्मेशन में मौजूद तमाम भारतीय जहाज वापस चले गए, लेकिन भारतीय तैयारों की एक बड़ी तादाद भारतीय फिजाई हुदूद में निगरानी के लिए तैनात हो गई, ताकि पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई न की जा सके। जदीद तवील फासले तक मार करने वाले बमों की वजह से भारतीय जहाजों के अजाइम और निशानों को फौरी तौर पर न जांचा जा सका और जमीनी हकायक की मालूमात का इंतजार किया गया। वैसे तो 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के बमबार तैयारे जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार थे, लेकिन जमीनी हकायक के मंजर आम पर आते ही एक इंतहाई अजीब सूरत हाल सामने आ गई। भारतीय तैयारों ने अपने जहाजों के कंप्यूटर में निशाने की गलत मालूमात डाली थी। तमाम बम अपने टारगेट से कई 100 मीटर दूर गिरे और इस तरह भारतीय पायलट्स की गलती की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया एक अच्छा प्लान हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। नाज़रीन, किसी जानी या माली नुकसान न होने की वजह से पाक फिजाइया को जवाबी कार्रवाई से रोक दिया गया, लेकिन खुद मुख्तार रियासत के खिलाफ जारहियत ने हुकूमत पाकिस्तान को
जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। तनाव से भरा हुआ 26 का दिन और अगली रात गुजारने के बाद आखिरकार 27 फरवरी की सुबह ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड का आगाज किया गया। सुबह 9 बजे दिन की रोशनी में 12 F-16 और 8 JF-17 थंडर तैयारों को बमबार तैयारों की हिफाजत पे मामूर किया गया के लिए मैदान में उतारा गया। भारतीय फिजाइया को शायद पाक फिजाइया की फिजाई सलाहियतों का अंदाजा नहीं था, इसीलिए जब भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की जानिब बढ़े तो उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय तैयारों का तमाम मवासलाती निजाम और रेडियो निजाम जैम कर दिया है और उन्हें एक एक भारतीय कदम की मुकम्मल आगाही भी थी। रेडियो जैम होने की वजह से बुखलाए हुए Su-30 तैयारों ने पाकिस्तानी तैयारों को निशाने पर लेने की कोशिश की तो हमारे F-16 तैयारों में लगे जदीद निजाम की बदौलत उन्हें भारतीय तैयारों के इरादे का पता चल गया। खतरे को भांपते हुए इस F-16 को, जिसे स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी उड़ा रहे थे, भारतीय तैयारे को मार गिराने की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तानी पायलट ने कामयाबी से भारतीय तैयारों को अपने रडार पर लिया और 9:36 पर अपना जदीद तरीन तवील फासले तक मार करने वाले MM मिसाइल को दाग दिया। भारतीय तैयारा Su-30 मिसाइल से बचने की कोशिश करता रहा और बिल आखिर तमाम रडारों की स्क्रीनों से गायब हो गया, जो इस बात का सबूत था कि नाज़रीन, अल कुद्स ब्रिगेड ने गाइडेड मिसाइलों से इसराइली फौजियों को मार दिया है। अल्लाह का अजाब या फिर बौखलाहट। इसराइली आर्मी ने फलस्तीन की कैद में मौजूद अपने ही कैदियों को हलाक कर दिया। जैतून का इलाका एक बार फिर शदीद झड़पों की जद में। इसराइल की एक और सप्लाई लाइन को काट दिया गया, जिससे शदीद खुराक और असलहे की कमी पैदा हो गई है। ये वो खबरें हैं नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं गजा की, जहां पर जिहादी तंजीमों ने इसराइल को मुकम्मल तौर पर दबोच रखा है और किसी तरह उनको भागने नहीं दे रहे। इसराइल के हर हमले का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अभी जो खबरें मेरे पास मौजूद हैं ये बहुत ही खास खबरें हैं, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि किस हद तक नुकसान पहुंच रहा है इसराइल को। नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर मेरे पास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। नाज़रीन, ये मुजाहिदीन ब्रिगेड का हमला है। मुजाहिदीन ब्रिगेड ने हिट किया है जैतून के इलाके में इसराइली आर्मी को, और जिससे बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है उनको। और जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में आपको बताया, कि उनकी सप्लाई लाइन को कट कर दिया गया है। नाज़रीन, इससे पहले भी मुख्तलिफ सप्लाई लाइन जो है वो कट की गई, लेकिन ये बहुत अहम सप्लाई लाइन थी जिसको मुजाहिदीन ब्रिगेड ने काट दिया है और इससे शदीद नुकसान पहुंचा है इसराइली आर्मी को। उनका एक बड़ा बुनियादी सोर्स था जहां से उनको खुराक और असलहा मिल रहा था, अब वो मिलना बंद हो चुका है। इंतहाई ज़बरदस्त हमला था जो कि मुजाहिदीन ब्रिगेड की तरफ से किया गया। अब नाज़रीन, इस हमले की थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं कि इस हमले में ना सिर्फ सप्लाई लाइन को काटा गया है, बल्कि इस हमले में कई जो फौजी हैं इसराइली उनकी हलाकतें भी हुई हैं। इसके साथ साथ दर्जनों ऐसे फौजी हैं जो कि शदीद जख्मी हैं नाज़रीन इस हमले में। और इस हमले में नाज़रीन 107 मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। और ये जो 107 मिसाइल है नाज़रीन, इसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मुजाहिदीन हैं वो बहुत करीब से जाकर हमले कर रहे हैं। इसराइली हेडक्वार्टर्स, इसराइली आर्मी को बहुत पास से निशाना बना रहे हैं। और यह भी वो हमला है जो कि बहुत करीब से किया गया है। आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ 9 किलोमीटर की रेंज है 107 मिसाइल की, उससे निशाना बनाया गया है। और नाज़रीन, 107 मिसाइल जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं तफसील से बता दूं कि ये बहुत खतरनाक हथियार है जो कि मौजूद है जिहादी तंजीमों के पास। नाज़रीन, ये ईरानी रॉकेट जिसको कहा जाता है, इसका आगाज़ ये जो बनाया था नाज़रीन, ये चाइना ने बनाया था और चाइना ने इसका नाम हसीब मिसाइल रखा था। और उसके बाद फिर ये ईरान ने बनाना शुरू कर दिया। और नाज़रीन, इस जंग में यमन, लिबनान और जितनी जिहादी तंजीमें हैं वो यही 107 मिसाइल इस्तेमाल कर रही है। अब नाज़रीन,
मैं दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता हूं। यह भी एक इंतहाई खास खबर है और यह खबर वो है जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस्राएली आर्मी ने अपने ही कैदियों को मारना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये इलाका है गजा में एक इलाका है और एक बिल्डिंग को निशाना बनाया था इस्राएली आर्मी ने, टारगेट किया था और वो उस बिल्डिंग में पहुंचे थे जहां पर पहले से ही कैदी मौजूद थे, जो कि फ़लस्तीन की कैद में इस्राएली हैं, वो मौजूद थे और इन्होंने अपने ही कैदियों को मार दिया। 2 कैदी थे। नाज़रीन, वो चीखो पुकार करते रहे। जब उनको अंदाज़ा हुआ कि इस्राएली आर्मी पहुंच गई है, वो चीखो पुकार करते रहे कि हमें बचाया जाए, हमें मारा ना जाए, हम इस्राएली हैं। लेकिन उसके बावजूद इस्राएली आर्मी ने उनको हिट किया, चूंकि उनका मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों को मारा जाए। बेशक हमारे लोग इसमें मर जाते हैं, वो मर जाएं, लेकिन हमने सिर्फ और यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर